Good morning to one and all. Hello, this is Dr. Himanshu Srivastav from Government Engineering College Bhavnagar, coordinator of this online lecture series Phase 3. Once again, we are ready with yet another very intelligent and very nice teacher with us. Let me introduce her. She is Dr. Sanghamitra Bhatt. She is an assistant professor Thank you, sir. in GEC Rajkot. Uh, Ma'am, we welcome you. Thank you, sir. She is an assistant professor in of English in Government Engineering College, Rajkot, and today she is with us with one of the topics from our syllabus of the subject, that is professional communication and ethics. She is with us with report writing, which is already visible on your screen. Without wasting much of the time, I would just request ma'am to please conduct the session and enlighten our students. This basically, ma'am, we are doing uh, in order to create a hub of knowledge for the Hmm. students across the state, so that anybody who is Yes. enrolled for who is a student of GTU will be able to understand this in a very nice manner, as well as these topics basically belong to people skills or soft skills area. So it Yes. is actually applicable to all. So anybody who wants clarity for this topic, that what is report writing, because really when you join some professional institutions, report writing is something which is not a part of syllabus. It is just, it is into syllabus because we want to teach you, so that we prepare you for an for a for the professional field. Till you will work, report writing, memo writing, certain things are always a part of your job. So, with this topic, ma'am is here. Let me hand over the screen as well as the mic to ma'am. Ma'am, please welcome once again on behalf of principal sir and on behalf of our college. I welcome you again. Please, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Good morning to all. It's really a pleasure, and I want to thank you, Himanshu sir, and the entire team of GEC Bhavnagar for this nice opportunity that you have given me. I'm thankful. I'm thankful to the core of my heart. Thank you, sir. And I welcome all of you to this syllabus of personal, professional communication and ethics. And in that, I'm going to do with unit number 2, that is all about writing skills. And specifically in that writing skill, I'm going to deal with report writing. So, before starting with report writing, I want to talk a bit about writing skill as such. As you all know, communication skills involve lots of sub skills like listening, speaking, reading, and writing. As I told you, the order, and in that order, that writing comes towards the end. That is the fourth sub skills of communication. So, from this, we can understand that out of all the four skills, writing is a bit complicated kind of skill. जब हम शुरू में कम्युनिकेट करना, तो सबसे पहला जो विधा हम सीखते हैं, दैट इज स्पीकिंग. हम बोलना सीखते हैं पहले. फिर जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब हम कॉपी किताबों में स्क्रिबल करना सीखते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, LKG क्लासेस में पढ़ते हैं, तब वो कर्व बनाना, लाइन बनाना, स्लैंट लाइन बनाना सीखते हैं, है ना. तो बोलना तो हम शुरू में ही सीख लेते हैं, इवन बिफोर गोइंग टू स्कूल. बट फॉर राइटिंग वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अगर मुझे आपको डिफाइन करना पड़े कि राइटिंग क्या है, तो राइटिंग है एक न्यूरो मोटर का स्किल, जिसके लिए आपको आपके दिमाग और आपके मसल के कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से राइटिंग इज अ न्यूरो मोटर स्किल. तो आज का जो ये टॉपिक है, ये जो सब टॉपिक है रादर, इस बिगर टॉपिक का जो कि है राइटिंग स्किल, जो कि आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 2 है, उसमें मैं उसी स्किल को आगे बढ़ाते हुए उसमें भी स्पेसिफिकली रिपोर्ट राइटिंग स्किल और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आज बात करने वाले हूँ. सो प्लीज द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. तो आज का जो ये सेशन है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सेशन को पढ़ने के बाद वी विल लर्न टू डिफाइन एंड स्टेट
and the purpose of a report. हम सीखेंगे कि रिपोर्ट क्या है, हम ये भी सीखेंगे कि रिपोर्ट के क्या क्या पर्पस होते हैं, किन किन पर्पसों के लिए हम रिपोर्ट को लिखते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होते हैं. हम मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, आई होप दैट you all will be in a position that you will try your hand on writing a report. Because after the end of the session, I will share one sample report with you. So this is what is the objective of the session. Next, please. So the very basic question that comes to us, हम जब कभी भी कहीं पर भी किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि वो चीज है क्या. तो आज हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज रिपोर्ट. सो ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रिपोर्ट. आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर किसी एक इवेंट में गए हैं, आप जब उस इवेंट से रिटर्न आते हैं तो आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपने वहां पे कैसे इवेंट में पार्टिसिपेट किया, वहां आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर. आप उनको ये सारी बातें मोस्ट ऑफ द टाइम वर्बली बताते हैं. और कई बार आप अपने दोस्त, किसी एक फ्रेंड को थ्रू अ लेटर ऑल्सो, through your writing also, you describe all the things that you have observed, you have felt, you have experienced, you have enjoyed, and you did in a certain event or an occasion. है ना. तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिपोर्टिंग. आप यहाँ पर चाहे आप बोल के कर रहे हैं या आप लिख के कर रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं. So from this, we can understand the concept of report. So what is the report? Report is actually a formal document, all right, written by someone who is participant in certain event or an occasion, and it is written for someone who was not there in that instance, in that present in that event at that time. So from this, we can say that report is written for specific purpose, for a specific audience. So this is what is a report. अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं. मैंने कह तो दिया है, it is a formal document. So let us understand what is the meaning of document and what does it mean when I say it is formal. So first of all, let's understand the meaning of document. Document means a text or a speech that we can store and that we can retrieve when there is a need. So ऐसा कोई भी स्पीच सिचुएशन या फिर एक राइटिंग सिचुएशन जिसको कि आप स्टोर कर सकते हैं और जब जरूरत है तब उसको वापस से सामने ला सकते हैं, यानी रिट्रीव कर सकते हैं. ऐसे टाइप के रिटन या ओरल इंस्टेंसेस को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं. रिपोर्ट के बारे में अगर मैं कहूं तो इसको हम कहते हैं इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट. सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल. जब हम किसी भी चीज को फॉर्मल कहते हैं, we understand that it involves lots of formality, lots of mannerism, lots of rule. In fact, a format, there is a particular structure that we follow when we say anything formal. So when I'm saying that report is a formal document, what I mean is ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, जो एक स्पेसिफिक रूल और मैनर को फॉलो करते हुए लिखा जाता है. दैट्स व्हाई रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट. एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि दिस इज रिटन बाय अ पर्सन हु वाज अ पार्टिसिपेंट इन दैट इवेंट or instance or a situation or an occasion, and it is written, and the receiver of this communication or the report, the receiver of the report is someone who was not there at that instance. अगर ये सिचुएशन को हम थोड़ा और एनालाइज करें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये रिपोर्ट ऐसे जने के लिए लिखा जाता है जो उस सिचुएशन में, उस इंस्टेंस में या उस इवेंट में प्रेजेंट नहीं था, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ये राइटिंग है ये काफी विविड टाइप का राइटिंग होना चाहिए. बाय विविड आई मीन
such that the person who is reading your report or who is listening to your reporting can understand the situation as it is. इस इंस्टेंस से एक बात और भी समझ में ये आता है कि अगर हमें किसी इंसान को बोल के या लिख के एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस और ओकेजन को समझाना है, तो हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो काफी क्लियर होना चाहिए, हमें काफी होना चाहिए, इसमें हमारे सब्जेक्टिविटी का रोल काफी कम होता है. Now, I will expand the definition and will say that report is a formal and objective kind of definition. At this juncture, I will stop and let you understand the meaning of objectivity, and I will contrast it with subjectivity so that you can understand what I mean by this. When I say any report or any writing is objective, I mean that writing has all the factual things in it. There is no personal opinion or subjective opinion. Personal is also called as subjective. So there is no place for any personal opinion in that report or in that writing or in that speech. So whenever a speech is such or whenever a writing is such that we talk only about fact, that we write only what we have observed, devoid of our personal observations or opinion in it, then that writing or that speech is called as objective. So, report is one such formal, objective document written by somebody who is a participant of that event and written for somebody who is supposed to take certain action or who is supposed to understand the event as such. So this is what is report. I hope I have made it amply clear. Sir, please move to next. Okay. After talking about what is report, ये देखना इम्पोर्टेंट है कि आखिर वो रिपोर्ट दिखता कैसा है और इस रिपोर्ट में होते क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है और ये बताते हुए मैंने आपको बताया था ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करता है. यहाँ पर एक बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हम कोई क्रिएटिव राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं. रिपोर्ट एक्चुअली राइटिंग के जिस टाइप का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोजिटरी राइटिंग. एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब होता है ऐसा राइटिंग का टाइप जहां पर आप उनसे कोई चीज कैसे हुआ, कैसे काम करता है, ऐसे चीजों का जब आप डिटेल्ड करते हैं देन दैट राइटिंग इज कॉल्ड एज एक्सपोजिटरी राइटिंग. इन शॉर्ट मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब है राइटिंग दैट इज क्वाइट एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, जहां पे आप सारे डिटेल को काफी सारे डिटेल्स का अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं. द राइटिंग इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, आई एम सॉरी, एंड रिपोर्ट इज वन सच एक्सपोजिटरी राइटिंग. तो मैं आपको बता रही थी कि रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट डिफाइंड होता है, रिपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट होंगे वो डिफाइंड होते हैं. इसीलिए चलिए हम इन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं. पहले रिपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट हैं. सर, कैन यू जस्ट एनलार्ज द फॉन्ट्स? So will you just enlarge the slide? Zoom in the slide. Hello? Hello? Okay, let's continue. The first component of a report is the title page of the report. So now, what is the title page? जैसे कि नाम से पता ही चलता है कि टाइटल पेज किसी भी रिपोर्ट का होता है. रिपोर्ट का टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल पेज में हम जो चीजें इंक्लूड करते हैं, द एलिमेंट्स आर रिपोर्ट का सब टाइटल अगर कुछ है तो
सपोज आप एक ऐसा रिपोर्ट लिख रहे हैं जो कि आपने एक इंडस्ट्री विजिट किया है, और इंडस्ट्री विजिट करने के बाद आपने वहां पर जो भी लिखा है उसका एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आपके रिपोर्ट के टाइटल पेज में होगा उस टॉपिक का नाम. सो रिपोर्ट, द टाइटल पेज ऑफ अ रिपोर्ट will have the name of the report first, that is report title first. And then if there is any subtitle, you will write about it. I will take one example. Suppose you have visited one software company of your city with the name XYZ. And in that visit, what you have observed is what are the different issues that the company is facing. So the title page of your report will have a report on industrial visit of a software company. That is the title of the report. And the subheading or the subtitle of the report will be an exploration of the problems faced by the company. So that would be the subtitle of your report or a further explanation of your report. In the title page, along with the title of the report, we also write author's name and designation. So ये है आपके टाइटल पेज का कंटेंट. ऑथर का नाम और डेजिग्नेशन के साथ आप ऑथर के ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखते हैं टाइटल पेज में. Title page also takes date of submission of the report. आप टाइटल पेज में एक डेट लिखते हैं एंड अबाउट द डेट इट मस्ट बी मेड क्लियर कि दैट डेट इज एक्चुअली द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट. इट इज नॉट एक्चुअली द डेट ऑफ राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट. तो मैं आपको जल्दी से क्विकली गो थ्रू करती हूँ. टाइटल पेज जो कि रिपोर्ट का फर्स्ट कंपोनेंट है, रिपोर्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. तो टाइटल पेज में होता है रिपोर्ट का टाइटल. अगर रिपोर्ट का कोई सब टाइटल है तो वो भी लिखा जाता है. रिपोर्ट के ऑथर का नाम और डेजिग्नेशन लिखा जाता है एंड इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑथर लिखा जाता है एंड डेट ऑफ सबमिशन भी इंक्लूड किया जाता है टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट में. Now the second one, the second component of the report is the abstract or the executive summary. देखिए जो रिपोर्ट है it is actually a detail, as I told you beforehand, it is part of expository type of writing, so it is a very vast, very detailed kind of writing. Usually जब हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसी अथॉरिटी को, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि अथॉरिटी को एक ही दिन में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉट मेनी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स दे हैव रिसीव्ड. So there is a constraint of time. To meet with that constraint of time, in a report, we include executive summary. As the name also indicates, it is an executive summary, means the summary written for the executive. Executive is someone who is responsible for execution. So we get the second component called as executive summary of the report. अब देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव समरी होता क्या है. एक्चुअली एग्जीक्यूटिव समरी जो है ये रिपोर्ट का एक ओवरव्यू होता है. इन एग्जीक्यूटिव समरी वी गिव ओवरव्यू ऑफ द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट. वी आल्सो इंक्लूड ओवरव्यू ऑफ द मेथड्स, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन. यानी 150 to 200 वर्ड्स में लिखे गए इस छोटे से ड्राफ्ट जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं, इसको पढ़ने के बाद में कोई भी इंसान जो उसको पढ़ रहा है ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिपोर्ट आपने सबमिट किया है उस रिपोर्ट को लिखने का पर्पस क्या है, किस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए इस रिपोर्ट को लिखा गया है और इस रिपोर्ट में लिखे हुए एक्शन को भी किस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए किया गया है. इस जो भी रिपोर्ट है इसमें जो भी एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, उनका फाइंडिंग्स क्या है और अल्टीमेटली उनका कंक्लूजन क्या है. सो एग्जीक्यूटिव समरी, ऑल्दो वो रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ही शुरुआत में, इनफैक्ट आपके सेकंड नंबर पे आ जाता है, पर
इस एग्जीक्यूटिव समरी को लिखने का जो ऑर्डर है रिपोर्ट राइटिंग में, जब आप लिखेंगे रिपोर्ट तो इट विल बी रिटन टुवर्ड्स द एंड। लास्ट में ही आप पूरा कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद ही आप एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हैं। रादर आप पूरा रिपोर्ट लिखने के बाद ही उसका समरी लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। लिखा तो रिपोर्ट के शुरू में जाता है, रखा जब ऑर्गेनाइज किया जाता है रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट में सेकेंड पोजीशन पे ही एग्जीक्यूटिव समरी को रखा जाता है, पर लिखा जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिपोर्ट। जब हम पूरा रिपोर्ट कंप्लीट कर चुके होते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर चुके होते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव समरी को लिखते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जीक्यूटिव समरी इतना इंटरेस्टिंग ढंग से लिखा जाता है, इतना क्लैरिटी के साथ लिखा जाता है कि अगर एक पर्सन रिलक्टेंट होता है कि रिपोर्ट के लेंथ को देखते हुए, if he feels that he doesn't want to read that bulky document, then executive summary comes as a savior. It saves his time, and also if it is written well, it creates interest in his mind. कई बार अच्छे से लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव समरी becomes a gateway towards the report. So these are the two purposes. First is it saves time, and the second thing is it creates interest in the mind of the reader, and with which he can continue reading the report. So this is what is executive summary. In short, an overview of the report. Let's move to the next component that is called as table of content. यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड CONTENT in very peculiar way, the way you are not quite used to. Many of you must, I have observed that many of you pronounce this word CONTENT as content, but the actual pronunciation of this word is content. So whenever I am saying content, I am actually referring to the constituent element of the report. So now we are in the table of content. अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो I think it is very clear. यहाँ पर हम सारे sections, subsections और उनके पेज नंबर का एक लिस्ट बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को देने का पर्पस यही है कि इट हेल्प्स इन अ प्रॉपर नेविगेशन इनटू द रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट से आप जल्द ही जिस सेक्शन और सब सेक्शन में जाना चाहते हैं उस तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में मैंने ऑब्जर्व किया है टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स को लेके भी कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली जहां पर हम नेविगेशन पर्पस से सेक्शन सब सेक्शंस को उनके पेज नंबर के साथ में लिखते हैं, the thing that we get is called as table of content. Index जो होता है that is always written towards the end of any document, और index आपको एक particular word को उस document में situate करने में help करता है। So the initial component of any book or any report is not index, but it is table of content, and the word is not content but content. I think I have made it clear. Now let me move to the next component. अच्छा, I must also add something. Table of content में हम page subdivision, division के पेज नंबर के साथ तो लिखते ही हैं। इसके अलावा अगर हमने हमारे रिपोर्ट में अगर कोई टेबल, कुछ फिगर या अपेंडिसेस ऐड किया है तो उनको भी हम टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड करते हैं फॉर easy navigation. With this, let me move to the next section that is called as introduction of the report. So what is the introduction? Introduction में हम लिखते हैं रिपोर्ट का बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में होता है स्कोप एंड लिमिटेशन और होता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो इफ वी रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी रिपोर्ट,
we will have a very nice opinion or point of view about what is the content of the report. पूरा रिपोर्ट का एक तरीके से समरी ही आप कह सकते हैं, आप लिखते हैं। रिपोर्ट को लिखने का बैकग्राउंड क्या है, आप किस कारण से इस रिपोर्ट को लिख रहे हैं, इस रिपोर्ट को लिख के आप क्या अचीव कर रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। आपने क्या कितने हद तक इस एक्सप्लोरेशन को किया है इस रिपोर्ट को लिखने में, और इस रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ इंक्लूड करते हुए आप जो एक छोटा सा राइटिंग का पीस लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट। Then we move to the next section called as literature review, that becomes a theoretical framework for the report. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लिटरेचर रिव्यू यानी हम यहाँ पर बहुत सारे पहले किए गए कामों का, ऑल द प्रीवियस वर्क दैट आर डन ऑन द फील्ड, कौन सा फील्ड, जिस फील्ड पे हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस वर्क हुए हैं आज तक, हम उन सबको एक्यूमुलेट करते हैं, उनका स्टडी करते हैं और उनका एक समरी बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लिटरेचर रिव्यू। हम ये लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि प्रीवियस वर्क में कहां पर गैप रह गया है, और हम अपने इस रिपोर्ट राइटिंग टास्क के थ्रू उस गैप को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आई मस्ट मेक वन थिंग वेरी क्लियर, that report comes out as an outcome of some research work. आपने जब तक कहीं पर भी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जब तक आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जब तक आपने किसी चीज को एक्सप्लोर नहीं किया है, एनालाइज नहीं किया है, इवैल्यूएट नहीं किया है, आप कभी भी रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। तो रिपोर्ट, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि रिपोर्ट इज एक्चुअली आउटकम ऑफ रिसर्च वर्क। सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि आप एक रिसर्च करना चाहते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए, इसीलिए आप ये लिटरेचर रिव्यू करते हैं। आप देखते हैं आपसे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक पे किसने क्या काम किया है, और उन कामों में ऐसा कौन सा सब एरिया है, कौन सा एस्पेक्ट है उस टॉपिक का जो अभी तक कवर नहीं हुआ है, और आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च लिखते हैं, रिसर्च करते हैं और ये रिपोर्ट लिखते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज आल्सो इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग कॉल्ड एज लिटरेचर रिव्यू। और ये जो लिटरेचर रिव्यू है, ये आपके रिपोर्ट के लिए जब आप लिखना शुरू करते हैं, ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है। The next component of report writing is actually methodology. मेथोडोलॉजी में आप लिखते हैं कि आपने जो रिसर्च किया है इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, उस स्टडी और रिसर्च को आपने कैसे कंडक्ट किया है, आपने कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स, कौन से प्रोसीजर को यूज किया है, आपने डेटा कलेक्शन कैसे किया है, और कौन सा एनालिसिस का मेथड ऑप्ट किया है इस रिपोर्ट को लिखने के लिए। सो रिपोर्ट को लिखने के लिए आपने जो भी मेथोडोलॉजी ऑप्ट किया है, उन सबको आप एक हेडिंग के अंडर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेथोडोलॉजी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड दिस सेक्शन इज अबाउट रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग। आपने क्योंकि एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी किया है, आपने रिसर्च किया है, तो आपके पास अब उन रिसर्च, उन एनालिसिस, उस इवैल्यूएशन के कुछ तो रिजल्ट्स होंगे। तो आप जब रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स लिखते हैं, तब आप एक्चुअली वो डेटा, वो ऑब्जर्वेशन और आउटकम्स के बारे में बात करते हैं। सो इन द रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग यू टॉक अबाउट डेटा that you got out of your analysis. You talk about the observations that you have made while you are doing that research, and you also talk about the outcome of all those analysis and evaluation that you did in the course of your research. Here, for result and findings, you use charts, you can use graphs, you can use tables and images for clarity. आप अपने आउटकम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कई बार बहुत सारे इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बट इलस्ट्रेशंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ, टेबल, इमेजेस। Now, let's move to the next section of the report, that is about the discussion and analysis. डिस्कशन और एनालिसिस होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। आपने को जो भी रिजल्ट मिला है उसका इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, आप इसका कंपैरिजन
प्रीवियस स्टडीज के साथ करते हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में बात करते हैं। आप सिग्निफिकेंस को का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आपका काम क्यों सिग्निफिकेंट है, ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आपने यहाँ पे किया है। So when you talk a lot, when you give the detail about everything that you have done in your report, you discuss all the things with headings and subheadings. That is called as discussion or analysis. And towards the end, we comes to the conclusion of the report. Conclusion is actually summary of the key finding. आपने एग्जीक्यूटिव समरी में भी समरी लिखा है और अब कंक्लूजन में भी एक समरी लिखते हैं। और यहाँ पर अगर आपका रिपोर्ट का नेचर ऐसा है कि आपसे कुछ रिकमेंडेशन मांगा गया है, तो आप इस कंक्लूजन को लिखने के बाद में एक नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकमेंडेशन सेक्शन। रिकमेंडेशन सेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर आप अपने सजेशंस देते हैं, क्योंकि अब आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर काफी एक्सटेंसिव स्टडी किया है, डेटा देखा है, ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, तो अब आप एक ऐसे पोजीशन पे हैं कि अगर कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन गिव योर सजेशन। So this suggestion portion is named as recommendation portion in report, and you include it in the writing. After that comes the next section, that is called as reference and bibliography. Bibliography का मतलब है all the books that you have referred. Biblio has relation with book. So आप जब कभी भी कोई रिसर्च करते हैं, कोई एक बड़ा एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, उसके लिए आपको ऑब्वियसली कई सारे किताबें, कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे जर्नल आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस, ऐसे बहुत सारे एजुकेशन मीडियम्स हैं जहां से आप हेल्प सीख करते हैं, जहां से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप कोटेशंस लेते हैं। कोई भी रिपोर्ट को प्लेजरिज्म फ्री बनाने के लिए उसमें उन सब चीजों का अकाउंट देना, एक्नॉलेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। And we do all these things by stating the books and journals we have referred in the form of bibliography. So with this, we write bibliography and references. And then come the last section of the report, and it is called as appendices. Appendices का मतलब होता है addendum. जो भी चीज आप लास्ट में maybe to make it more clear, maybe you consider that there are certain supplementary things that are needed. So you add all those supplementary things towards the end of the report and you call it appendices. Appendices में आप कई बार अगर आपने कोई क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है इस सर्वे को, अगर ये सर्वे रिपोर्ट है और आपने कोई क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है, तो आप उसको अपेंडिसेस में ऐड कर देते हैं। कई बार कुछ रॉ डेटा अगर आपने कलेक्ट किया है और आपको लगता है कि दिस कैन सर्व एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडर, तो देन यू कैन आल्सो इंक्लूड इट इन द अपेंडिसेस. You can also include detailed calculation if you think it is important, if you think it can help reader further, so you add it to the appendices. So these are the various 12 components that you need that constitute the structure of the report, or rather you can call them as component of the report. इतने सारे कंपोनेंट को देख के अब जरा घबराइए मत, क्योंकि कोई नेसेसरी नहीं है कि हर टाइप के रिपोर्ट में ये सारे कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाए। आने वाले स्लाइड्स में व्हेन आई विल टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, आई विल टेल यू कि हाउ डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस you can decide on including some element, and you can even decide on not including some element. By this I mean that all the components that I talked about in the slides, they are not all obligatory component of report. So next slide. Next. Hello. Okay. Now let's talk about purpose of report. So please click next. Click the slide. Okay. So these are the various purpose for which we write report. जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि रिपोर्ट कई अलग अलग कारणों से लिखे जाते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी हम रिपोर्ट लिखते हैं? The purposes are, sometimes we write to inform,
किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जस्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिख दीजिए। आपको कुछ एनालिसिस की जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट यू collect the information, assimilate the information, and you write a report, and it will be called as an informative report. कई बार हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट लिखना होता है। FIR इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जब हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाते हैं कोई भी इंसिडेंट के लिए, तो उसका पर्पस होता है, वो लीड करता है रादर फर्दर डिटेलिंग को। आपने जो भी कुछ बातें कही है वो बातें कितनी सच है, कितनी वैलिड है, या फिर जो भी आपने इंसिडेंट आपने स्टेट किया है उनके अकरेंस के पीछे और क्या क्या कारण है, इन सब चीज एनालाइज करने के लिए लिखा जाता है। तो द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट बिकम्स टू इन्वेस्टिगेट। रिपोर्ट कैन बी रिटन टू प्रोवाइड एन अपडेट। Report can also be written for explanation. Report can also be written to justify. Report can also be written to recommend on something. Report can be analytical purpose. Report can be written for evaluative purpose. So next. Next, please. Next slide. Hello. Okay. Ma'am, Madam, types of report which we did. Do you want to move to newspaper report? Yes, yes, yes. Okay, okay, ma'am. Yes. Okay. As I just talked about various purpose for writing the report, तो उस purpose के basis पे अब हम क्या क्या different reports हो सकते हैं, let me talk about it. The first type of report that is in front of your screen is newspaper report. एक्चुअली जब हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखा जाता है उसका पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है। सो अगर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है तो उसमें जो राइटर होते हैं दे talk only about the fact. In very rare cases they give their opinion. Mostly it is very much objective, as you can read on the slide. I have written that newspaper report is a combination of facts and opinion, but mostly facts, and in very less circumstances it also includes opinion, because the purpose of newspaper report is simply to inform. Next, please. Now, the next report on your screen is eyewitness report. So it is a bystander view of a situation. आप अगर उस किसी भी एक इंसिडेंट के समय अगर आप उस वहां पे प्रेजेंट हैं और आपने जो भी कुछ देखा है उस समय उस इंसिडेंट को होते हुए, दैट कोर्स ऑफ एक्शन इन दैट chronological order you write, and that is called as eyewitness report. It is a detailed account of what happened in that situation. इस रिपोर्ट का पर्पस भी इंफॉर्मेशन देना ही होता है, इसीलिए इसमें कोई भी एनालिसिस, इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन वाले ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, नाउ दिस इज एन इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। अगर कोई रिपोर्ट को प्योरली इंफॉर्मेटिव ही होना है, हमने देखा इसके पहले जो दो रिपोर्ट्स थे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आई विटनेस रिपोर्ट, वो भी इंफॉर्मेटिव इन नेचर थे। पर मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियन। पर अगर किसी रिपोर्ट को टोटली इंफॉर्मेटिव ही होना है, जैसे कि आप लोग अपने लैब के रिपोर्ट्स लिखते हैं, आप अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब में जो भी रिपोर्ट लिखते हैं, दोज रिपोर्ट्स आर एक्चुअली strictly informative in nature. So when a report is informative, very strictly informative in nature, so what we do is what we include in those reports is all the factual things. We provide all the factual information only. Informative reports helps in understanding better the subject. The subject on which we are giving information, through informative report, we give information that makes understanding of that subject easier. That informative report can be written and can be oral also. And that's all, it doesn't have any personal views in it. So in short, we can say that
informative report is 100% factual report. So next slide. Next, please. Okay. So now the report is field trip report. So if you have gone out for some industrial visit or for some field trip, so after coming from there, you are asked to write a report. This report is obviously not meant for कि आपको बताएं लोगों को कि आपने कितना एंजॉय किया. सॉरी, फील्ड ट्रिप रिपोर्ट जो है दैट इज एन एकेडमिक काइंड ऑफ रिपोर्ट. तो जब आप फील्ड ट्रिप रिपोर्ट बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि आपने वहां पे क्या देखा और आपने वहां पे जाके क्या किया. ऑब्वियसली क्या किया मतलब आपने वहां पे रास्ते में जाते हुए कितने गाने गाए, डांस किए. दे आर नॉट द इंक्लूजन ऑफ दिस रिपोर्ट. दिस रिपोर्ट इंक्लूड कि अगर आप कहीं पे विजिट पे गए थे, वहां पे एकेडमिकली आपने क्या किया और एकेडमिकली आपने वहां पे क्या देखा. दैट इज द इंक्लूजन ऑफ फील्ड ट्रिप रिपोर्ट. नेक्स्ट. ओके, नाउ इट इज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक मिला है जहां पे आपको कहा गया है कि आपको किसी चीज की सच्चाई ढूंढनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, फर्दर क्लैरिफिकेशन लेके आना है, सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज यू विल राइट अ रिपोर्ट कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट होगा जिसमें आप उस मैटर को एनालाइज करेंगे और उसका कंक्लूजन तक पहुंचेंगे. उस मैटर में अच्छे से आप रिकॉर्ड करेंगे डेटा, आप उन डेटा का एनालिसिस करेंगे, आप उस डेटा से रिलेटेड एविडेंसेस क्लियर करेंगे और फिर आप एक लास्ट में एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. मैंने आपको अभी कंपोनेंट ऑफ रिपोर्ट में जितने भी कंपोनेंट बताए हैं, यूजुअली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं. So may I move to the next one? This is an incident and accident report. ये एक फॉर्मल रिकॉर्डिंग है उन सारे फैक्ट्स का जो कि किसी एक इंसिडेंट में या फिर किसी एक एक्सीडेंट में आपने होते हुए देखा. बट रिमेंबर इट इज अ फॉर्मल रिकॉर्डिंग. फॉर्मल है इसीलिए इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेगा और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज में लिखा जाएगा. एंड ऑब्वियसली ये भी सब्जेक्टिव अकाउंट नहीं होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ दिस इज एन इवैल्यूएशन रिपोर्ट. आपको अगर कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसमें आपको डेटा कलेक्शन, डेटा एग्जामिनेशन, डेटा एनालिसिस एंड गेटिंग अ रिजल्ट एंड देन आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन टाइप का कोई काम, इस नेचर का काम अगर आपको दिया जाता है, उस काम के बाद में आप जो रिपोर्ट लिखेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एन इवैल्यूएटिव रिपोर्ट. इवैल्यूएटिव रिपोर्ट को लिखने का एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा और इसको लिखने का एक स्पेसिफिक पर्पस होगा. इवैल्यूएटिव रिपोर्ट हमेशा रिपोर्ट करेगा रिजल्ट, फाइंडिंग, इंटरप्रिटेशंस, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, क्योंकि ये एक इंटेंसिव रिसर्च का आउटकम रहेगा. सो जो भी कंपोनेंट मैंने आपको शुरू में कहे थे, ऑल द 12 कंपोनेंट्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, दैट विल बी द इंक्लूजन ऑफ दिस इवैल्यूएटिव रिपोर्ट. नेक्स्ट प्लीज. Next slide, please. Okay, so this is your progress report. So अगर आप एक किसी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखें तो प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी स्टूडेंट का एकेडमिक प्रोग्रेस का रिपोर्ट हो सकता है. ये किसी प्रोजेक्ट का भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बड़ा ही मैसिव टास्क होता है जहां पर हमारे सामने टाइम बाउंड चीजें होती है करने के लिए. हमें एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टास्क को कर लेना होता है, यानी देयर आर सम गोल्स इन द प्रोजेक्ट. सो वी राइट अ प्रोग्रेस रिपोर्ट. प्रोग्रेस रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तब हम उसमें अपने सब गोल्स के हम किस स्टेटस में है. एक्चुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट इज एक्चुअली द स्टेटस रिपोर्ट. यहाँ पे आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपने जो भी सब गोल्स डिसाइड किए हैं वो कितने हद तक हो चुके हैं, आप इन टास्क को करते हुए कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर रहे हैं, क्या इन प्रॉब्लम्स के साथ आपका ये प्रोजेक्ट टाइमली खत्म हो पाएगा कि नहीं. सो ऑल द aspects related to the management of the project we talk about, and the status of the occurrence of the project we talk about when we write a progress report. I think
I have talked a lot on report writing in this presentation. I have started with the concept of presentation. Then I talked about the structure of presentation or the component of presentation. I have talked about various purposes for which we write this report. And then after, on the basis of that purposes, I have talked about types of report. Uh, Himanshu sir, is it enough? Hello? Hello? Sir, am I audible? Hello? You're audible. Okay. So do I have some more time? It was a fabulous session. Thank you. Thanks a lot for this wonderful session, ma'am. And definitely, Okay, thank you, sir. if I want to say about the session, it was crisp, clear, with one of the best pronunciations that you have said, as well as quite informative. In fact, covering all the facets of report writing, types of report writing, and definitely uh, it is not only for this particular semester, but definitely the way you have conducted the session, it would be for generations to come, because it was very clear, very concise, and quite informative as well, telling and touching each and every type of report and giving a glance of it, so that there is a clarity with the students that on if this is the report, then what should be the content, if this is the report, then what should be the content. So absolutely fantastic, ma'am. uh, if at all, it is the almost the last ritual that we normally do. So those students who are on YouTube, if you have any question regarding the session, I give you 30 seconds to 1 minute. Please drop down your question into the comment box, so that I can raise that question on your behalf, and ma'am will be answering it up. So Sir, one more I'll just thing. wait for One 30 more seconds. want to add. Sir, I want to add something. Actually, I have prepared one sample report for the students and I will share it with you so that you can share with the students. Hello, am I audible? Hello, Yes, sir, ma'am. am I Yes, ma'am. audible? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. I have, all right. I will share you the sample report for sharing with the students. That's very nice. Okay, sir. Okay, ma'am. So we'll just proceed to conclusion. I'll request Ahuti, ma'am, to please propose vote of thanks, ma'am. Please. Audible, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, madam, for sparing your valuable time and giving the smallest details about report writing to our students, because as we know that the students need to be trained in their writing practices. And once again, thanks a lot, as we are treating this video series as the learning repository for our students, and this resources will be quite helpful and useful to all the students of Gujarat across the coming years. Thanks a lot, madam. Thank you, ma'am. Okay, so Thank you we'll for the thank platform. you, ma'am, and thanks to MediaCell for making it live for us. The team of MediaCell, thanks a lot, and stay tuned. Once again, we'll be back with one another session. Till then, we'll call it a day. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, sir.